So first question is 3x to the power 4 y is equal to minus 4x, 8x is equal to 4. We have to find its slope. So to find the slope, we need its derivative dy by dx differentiating with respect to x. This is 3 into 4x cube minus 4. This is 12 x to the power x cube minus 4. So slope, that is dy by dx at x is equal to 4. So this is 12 x 4 in cube minus 4. So we get 12 into 64 minus 4. 768 minus 4. 764 is the slope here. So we get 764 as the slope. So in this case, slope is 764. Next question. Second, find the slope of the tangent to the curve y is equal to x minus 1, x divided by x minus 2 upon x minus 8x is equal to 10. So second question, again we have to find the slope to the curve y is equal to x minus 1 upon x minus 2 and at the point x is equal to 10. Now differentiating dy by dx, applying UV rule, cosine rule. So denominator, derivative of numerator, that will be 1, minus numerator, derivative of denominator is 1, divided by denominator whole square. So we get x minus 2 minus x plus 1 divided by x minus 2 whole square. So this is minus 1 upon x minus 2 whole square. So the slope m dy by dx 8x is equal to 10, that is minus 1 upon 10 minus 2 whole square, minus 1 upon 8 square, that is 64. So slope of the tangent is minus 1 upon 64. So this is the second question. So here we have to find the slope only and the derivative of the function represent the slope at that point. So only find the derivative और फिर x की वैल्यू रख देना है. So next question. Again हमको slope ही find करना है. Find the slope of the tangent to the curve y is equal to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2. x coordinate यहाँ पे 2 है. Now the third question, here function is y is equal to x cube minus x plus 1 and a slope we have to find it x is equal to 2. X coordinate is 2. So to find the slope we need the derivative only. So dy by dx, this is 3x square minus 1. So the slope, अब x cube का differentiation 3x square minus x का 1 हो गया. So m is dy by dx at x is equal to 2 because x coordinate is 2. So this is 3 into 2 square minus 1. So 3 into 4 minus 1. This is 12 minus 1. So slope is 11. So in this case we get the slope 11. So all these cases are only to find the slope.
and that is easy to find the slope, very easy. We can find it easily. Now next question, fourth question. Again we have to find the slope, and that is find the slope of the tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3. अब यहाँ पे x coordinate 3 है. Fourth question, x cube minus 3x plus 2 and x coordinate is 3. Now its derivative will be 3x square minus 3, x cube 3x square minus 3x minus 3 plus 2 constant है 0 होगा. So its slope will be 3 into x square. So that is 3 square. So 3 into 9. So this is 27 minus 1. So 26 is the slope here of this curve. तो 26 स्लोप हो गई. अब इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, उसके लिए इक्वेशन है कर्व का. नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व. यहां नॉर्मल की स्लोप फाइंड करनी है एट द पॉइंट x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta, 8 theta is equal to pi by 4. तो नॉर्मल की स्लोप फाइंड करने से पहले हमको टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी होगी. Then we will find the slope of the tangent. So, first question, we have x is equal to a cos cube theta. That is the parametric form. So dx by d theta, that will be a into t cos cube means cos square theta into minus sin theta. चेन रूल से हमने डिफरेंशिएशन किया है. a into 3 cos square theta, cos theta का डिफरेंशिएशन minus sin theta. So this is minus 3a sin theta cos square theta. Now y is a sin cube theta. Differentiating, so dy by d theta, that is a into 3 sin square theta और sin theta का differentiation cos theta. Same rule से हमने differentiate किया. So this is 3a cos theta sin square theta. Now slope will be dy by dx, which is dy by d theta divided by dx by d theta. So that is 3a cos theta sin square theta divided by minus 3a sin theta cos square theta. अब देखिए 3a कैंसिल हो गया, एक cos theta कैंसिल हो गया, एक sin theta कैंसिल हो गया. So we get minus sin theta by cos theta, that is minus tan theta. So this is dy by dx. Now slope of tangent, that will be m dy by dx 8 theta is equal to pi by 4, that is minus tan pi by 4, and that is equal to minus 1. So its slope of the tangent is minus 1. टेंजेंट की स्लोप -1 हो गई. अब हमको नॉर्मल की स्लोप निकालनी. स्लोप ऑफ नॉर्मल, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, that will be -1 upon slope of tangent.
So that is minus 1 upon minus 1, which is the slope of the tangent. So this is 1. Therefore, slope of normal is 1. Slope of tangent is minus 1. ये पैरामेट्रिक फॉर्म था जिसमें हमने फाइंड किया स्लोप नॉर्मल का, पहले उसके लिए टेंजेंट की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप के बाद नॉर्मल की स्लोप फाइंड की गई है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व. अगेन ये पैरामेट्रिक फॉर्म ही है और हमको नॉर्मल की ही स्लोप निकालनी है. स्लोप सेम फॉर्म हमको फिर अप्लाई करना है. इस क्वेश्चन में भी हमको स्लोप भी निकालनी है नॉर्मल की. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं. 6th क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा. डिफरेंशिएट कर दें तो dx बाई डी थीटा, 1 का 1 कांस्टेंट 0, so this will be minus a cos theta. Y is b cos square theta. Differentiating dy by d theta, this is b into 2 cos theta and cos theta का differentiation minus sin theta. So we get minus 2b sin theta cos theta, ये dy by dx. Now dy by d theta, dy by dx, this is dy by dx, dy by d theta divided by dx by d theta. So this is dy by d theta minus 2b sin theta cos theta divided by dx by d theta minus a cos theta. So cos theta cancelled out, minus minus plus. So we get 2b by a sin theta. Now slope of the tangent, अब उसके लिए m is equal to dy by dx at theta is equal to pi by 2 it is given. This is 2b by a sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1. So this is 2b by a. So slope of the tangent is 2b by a. Now we have to find the slope of the normal. So slope of normal, that is minus 1 upon slope of tangent. So that will be minus 1 upon 2b by a. So this is minus a upon 2b. So slope of the normal is minus a upon 2b. अब टेंजेंट की स्लोप 2b by a है और नॉर्मल की स्लोप minus a by 2b है. So this was the 6th question. Now next question, I think. Find the point at which the tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x axis. तो अब देखिए यहां भी स्लोप है या पॉइंट फाइंड करना है हमको. स्लोप नहीं है बट पॉइंट इज देयर, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट. सेवेंथ क्वेश्चन, हमको पॉइंट फाइंड करना है. कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 where tangent is parallel to x axis.
तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कंडीशन है हमारे यहां। अब हमको पॉइंट फाइंड करना है। सो डिफरेंशिएटिंग दिस विल बी 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ठीक है। इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, this means slope m, which is dy by dx, is equal to 0. So 3x square minus 6x minus 9 is equal to 0, divided by 3. We get x square minus 2x minus 3 is equal to 0. So this is x minus 3x plus 1 is equal to 0. हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टर किया। So we get x is equal to 3 and minus 1. ये दो वैल्यूज हमको मिली हैं, 3 और -1, जिसमें हम टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो कंडीशन अप्लाई किया है कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो टेंजेंट की स्लोप जो होगी वो 0 होगी, बिकॉज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज 0. सो एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, that slope will be 0, and slope is the derivative dy by dx, which is equated to here 0, and solve, then we get x is equal to 3 and minus 1. Now we have to find, so x की वैल्यू से हम y की वैल्यू निकालेंगे यहां से। So to find the point when x is 3, y will be 3 cube minus 3 into 3 square minus 9 into 3 plus 7. अब ये 3 क्यूब और 3 इंटू 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो -27 प्लस 7, ये आ गया -20. x इज -1, इन दैट केस y विल बी -1 का क्यूब -3 -1 स्क्वायर -9 -1 प्लस 7. So here this is -1, this is -3, this is +9 and my +7. So 16 minus 4, that is 12. So points are 3 लेने पे y की वैल्यू -20 है, -1 लेने पे y की वैल्यू जो है वो 12 है। तो ये दो पॉइंट हुए जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के